खड़े होकर अपनी अपनी सहभागिता निभाएंगे। ओम शांति शांति शांति। जाबाज सपूत सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को हम सबका बहुत बहुत सलाम। हमेशा हमेशा वो हम सबके हृदय में जीवित रहेंगे। Namaskar and good morning. I, Shubha Kapil, with my co-host Man Bardhan Kant, welcome you all on the occasion of 7th India International Science Festival, IISF 2021. Before we formally start this inaugural ceremony, let's us witness a curtain raiser show with an inaugural classic performance by Aprupa Patnaik. She is a classical Odissi dancer with an introduction into IISF and relevance of science in India, depicted through progression, mapping, and augmented reality. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this innovative curtain raiser show. India is a great land of beautiful, colorful festivals. These amazing festivals are delightful expressions of India's identity. Festivals provide wonderful opportunities to celebrate the identity with sheer joy. Science is also a unique and integral dimension of the Indian identity. India International Science Festival has been designed to celebrate the Indian scientific identity in its true spirit. त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल ये भारत का कैरेक्टर भी है और भारत का टेम्परामेंट भी है और भारत की ट्रेडिशन भी है। आज के इस फेस्टिवल में हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रेंड्स, इंडिया हैज ए रिच लीगेसी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्धयैव सः सर्वस्य लोचनं शास्त्रं
यस्य नास्त्यन्धैव सः। The sages and seers of ancient India were actually scholars, scientists, and innovators who created a unique blend of humane philosophy with applied science. Theories and discoveries made during the Vedic era created and strengthened the foundation of modern science and technology. Town planning, invention of zero, agrarian practices, medicine, and astronomy had positioned India among the global leaders in these fields. But over the years, many invaders, plunderers, and rulers have come drawn by its golden legacy and vast riches. During the dark days of its colonial era, the Indian knowledge system was even derided as unscientific. But some brave sons of our glorious motherland rose to the occasion, creating centers of science, validating the strength of ancient Indian knowledge through rigors of modern scientific parameters. Since India's independence in 1947, India has achieved self-sufficiency in the field of agriculture, established scientific institutions, research facilities, progressed in energy sector, achieved nuclear capability, sent probes to Moon and Mars, demonstrated firepower by a wide range of missiles and built satellites. India's INSAT is the largest domestic communication satellite system by any country in the Asia-Pacific region. India has also conducted 41 scientific expeditions to Antarctica and has research bases in Antarctica, 2 operational permanent stations, Maitri and Bharati, in the Arctic, Himatri, and in the Himalaya, Himanch. India has been exploring the living and non-living resources, besides mapping the bathymetry of deep Indian Ocean. The vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has laid the foundation for a new India by various initiatives such as establishment of industrial corridors, smart cities, smart power systems, Digital India, Skill India, space technology and research, achievements in the field of defense sector. Our indigenously built weapon systems and equipment has today made India a major player in the global arena. India is developing its educational thrust to compete with other developed countries by grooming young Indian scientific minds. In the era of burgeoning artificial intelligence, the inception of the national strategy is going to take this forward by leaps and bounds. Programs like Inspire Award and Manak, instituted by our Honorable Minister of State for Earth Science, Shri Jitendra Singh, encourages children to visualize and analyze needs of the society and devise new ideas and initiatives in this field. India also achieved a milestone as cumulative vaccine doses surpassed 1 billion mark, which displays India's capability and strength of the Sabka Prayas mantra. Our work in the field of healthcare, agriculture, energy and space has once again proved India's might in the field of science and technology and positioned India as a world leader, a Vishwaguru. India has launched its first manned ocean mission, Samudrayan,
joining 6 other nations engaged in exploring the ocean depths for studies and research. As per the vision of a new India by 2030, the Ministry of Earth Sciences has drafted a blue economy policy that promotes smart, sustainable, and inclusive growth and employment opportunities within the Indian Ocean region. As the curtain raiser for the 7th India International Science Festival, let's celebrate the 5 pillars of Azadi Ka Amrit Mahotsav by remembering the contribution of science and scientific community in our freedom struggle, showcasing our achievements in the last 75 years, ideas and innovations for a new India, action plan for a bright future, and reinforcing our resolve to make an Atmanirbhar Bharat. In IISF 21, let's engage, encourage, and celebrate the STEM to provide opportunities for our futuristic goals as a nation and to improve our life as individuals. Put your hands together for this innovative curtain raiser show. सच मायने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और कला का ये अनूठा संगम था। इसके लिए आप सबसे तालियां निवेदित है। और वैज्ञानिक नजरिया से लैस कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, इससे पहले कि हम अपने गणमान्यों को, विशिष्ट अतिथियों को मंच पर आदर के साथ आमंत्रित करें। कुछ वैज्ञानिक पंक्तियां। चलो विज्ञान को स्वर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें, प्रामाणिक ज्ञान को स्वर दें। चलो विज्ञान को स्वर दें, नवल अभियान को स्वर दें। कला विज्ञान का संगम, नाट्य विज्ञान का मंचन। कला विज्ञान का संगम, नाट्य विज्ञान का मंचन। बने विज्ञान पर कविता, बहे तब ज्ञान की सरिता। चलो नूतन कलेवर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें। राष्ट्र के लोक गीतों में, राष्ट्र के लोक गीतों में ढले विज्ञान रीतों में। राष्ट्र के लोक गीतों में ढले विज्ञान रीतों में। हो दादी की कहानी में, स्वप्न सज्जित जवानी में। रूप ऐसा मनोहर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें। चंद्रशेखर रमन की हो, चंद्रशेखर रमन की हो, बात रामानुजन की हो। चंद्रशेखर रमन की हो, बात रामानुजन की हो। बात पाई दशमलव की, बात जीरो के उद्भव की। विरासत को समादर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें। अंधविश्वास छूटेंगे, अंधविश्वास छूटेंगे, कुरीतों का पतन होगा। अंधविश्वास छूटेंगे, व्यर्थ के पास टूटेंगे। अंधविश्वास छूटेंगे, व्यर्थ के पास टूटेंगे। कुरीतों का पतन होगा, प्रगति पथ पर वतन होगा। उजाला राह में कर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें। मैं अपने सभी गणमान्यों का, आदरणीयों का, विज्ञान प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सबके बीच केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग व आयुष मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी उपस्थित हैं। उनके लिए आप सबसे तालियां प्रार्थित हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए आप सबसे तालियां निवेदित हैं। गोवा के पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप सबसे तालियां प्रार्थित हैं। CSIR के निदेशक, महानिदेशक और
DSIR के सचिव आदरणीय डॉक्टर शेखर सी मांडे भी हम सबके बीच उपस्थित हैं, उनके लिए भी तालियां प्रार्थित हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी के लिए भी तालियां प्रार्थित हैं। और आप सबके लिए भी एक बार पुनः जोरदार तालियां, ताकि तालियों की अनुगुण से हॉल भर जाए। Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant is going to join us shortly. May I now request our respected dignitaries to come on the stage, please. May I invite on the stage Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Shri Sarbanand Sonowal ji. May I also invite on the stage Honorable Minister of State for the Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences and Prime Minister's Office, Personal Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, Department of Space, Dr. Jitendra Singh. I'm immensely pleased to invite Shri Shripad Yasho Naik ji, Honorable Minister of State for Tourism, on the stage. May I request respected Dr. Shekhar Singh Mande ji, DG CSIR, Secretary DSIR, to please come on the stage. We have with us respected Dr. M. Ravichandran ji, Secretary, Ministry of Earth Sciences. I am pleased to invite Honorable Om Prakash Sakleja ji, S&T Minister, Government of Madhya Pradesh. I also requested respected Shri Jayant Sahasrabudhe ji, National Organizing Secretary, Vigyan Bharati, to grace the stage. Thank you, respected dignitaries, for gracing the stage with your august presence. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, is about to join us. बहुत शुक्रिया शुभदा। विज्ञान प्रेमियों, आप सबसे एक बात कहनी है कि दीप हमारी सभ्यता का और हमारी संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक मांगलिक कार्य के शुभारंभ से पहले दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से रही है। संभवतः इसके पीछे की वैज्ञानिकता यही हो सकती है कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है। मैं अपने सभी मंचासीन गणमान्यों से, माननीयों से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन की तेजस्विता की इस रीति को आदर दें। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रां तमसो मां ज्योतिर्गमय या असतो मां सद्गमय वीणारण्डितकरा मृत्योर्मां मृदंगमय। या श्वेतपद्मा आइए चलें अंधकार से प्रकाश की ओर। या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्ल
मूलां ब्रह्म विचारसार तेजस्विता की इस रीत को निभाने के लिए आप सभी माननीयों आदरणीयों का मैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा और आप सबसे कहना चाहूंगा कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी भी हम सबके बीच पधारेंगे। अब मैं आदरणीय इंदिरा मूर्ति जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंचासीन सभी माननीयों एवं गणमान्यों को पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। आदरणीय इंदिरा मूर्ति जी। और आप सबसे पुनः पुनः तालियां निवेदित है। हॉल में ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। इंदिरा मूर्ति जी केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत। गोवा के पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद यशो नायक जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत। मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय माननीय सकलेचा जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत। CSIR के निदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत। अंत में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रविचंद्रन जी की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें और उसके साथ साथ विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत। मंचासीन सभी विशिष्ट व्यक्तित्वों की गरिमामयी उपस्थिति को मैं कृतज्ञ प्रणाम करता हूं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें और आप सबसे तालियां निवेदित है। Respected Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Ayush, Sri Sarvananda Sonowal ji, respected Honorable Minister of State, Independent Charge, Science and Technology and Ministry of Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, respected Honorable Minister of State, Tourism, Ports, Shipping and Waterways, Sri Sripat Naik ji, Honorable Minister for the State of Madhya Pradesh, Science and Technology, Dr. Sekhar Mande, DG CSIR and Secretary DSIR, and Dr. Vijay Khatkar, he is on the online, President BIBA, and Dr. Mr. Jainji, National Organizing Committee for this function from Vigyan Bharati, Madam Indra Murthy, Joint Secretary, MOES, invitees and delegates from both physically present here as well as from virtually from many places in India. My colleagues and friends, students and teachers, print and media, a very good morning to all of you. I sincerely welcome you all for this inaugural function of India International Science Festival 2021. IISF is a festival to celebrate the achievement of India's scientific and technological advancements with the students, teachers, innovators, craftsmen, scientists, and technocrats from India and abroad. The prime motive is to inspire young generation about the science, to empower them as citizens, and to create the next generation of scientists, engineers, and technocrats. The journey of IISF was started in the year 2015 from Delhi, and it is moved over different places from north, south, east, and now it has come this year to the west, that is in Goa. The
place chosen for Goa, maybe basically two reasons. One is, of course, we want to conduct this IISF in the western region in Goa. And also second thing is, as you all know, that under the Government of India, the 2030 vision policy, the ocean blue economy ocean policy have been drafted now. It is on the anvil. So you all know the Goa is the hub of the ocean science, especially marine science. The Goa Oceanographic Center, NIO, started in 1965 from the same place, as well as the Indian Antarctic program also started from the same place, from the Goa. And also the Goa University, one of the best department of marine science also is in Goa. So considering this location, Goa, and ocean connectivity, I think this is the important place to consider this as a best place for this inaugural function. The Ministry of Earth Sciences, Ministry of Science and Technology, and Vingan Bharati, along with the Government of Goa, are organizing IISF 2021. Ladies and gentlemen, we have with us Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji. I welcome you, sir. मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के लिए पुनः पुनः तालियां निवेदित है. As I mentioned, considering the importance of curiosity, creativity, and innovation, the year of theme IISF 2021 is chosen as celebrating creativity in science, technology, innovation, and a prosperous India. Of course, we have planned for 12 verticals, of course, in various places, including the Mega Science, and also Expo is arranged in Goa. And as we are celebrating this 75th year of independence, all programs also reflect the spirit and the idea of Azadi Ka Amrit Utsav. Many of you may be knowing that the Ministry of Earth Sciences, it is the youngest ministry, one of the youngest ministry. Of course, many people may not be knowing students and science. That's why I want to promulgate the Ministry of Earth Sciences is one of the, what is called the ministry to look after the whole holistic view of Earth, atmosphere, ocean, solid earth, as well as the ice. So that's why this particular program is organized by the Ministry of Earth Sciences. And I request to students, teachers, to know about each of the ministries, especially the scientific ministries, and what are the research institutions in your place, in your district, in your state, what they are doing, and try to create awareness and also the importance of research, what they are doing, so that you can think about what you can do and for that. I think with this, I once again welcome all the dignitaries on the dais, as well as the students, teachers, and invitees all for this IISF 2021. Thank you very much. Thank you very much. May I now invite Indra Murthy ji to kindly felicitate Honorable Minister Dr. Pramod Sawant ji. माननीय गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का पुष्पगुच्छ के साथ आदरणीय इंदिरा मूर्ति जी स्वागत कर रही हैं. तो आप सबसे तालियां तो प्रार्थित कर ही सकता हूं. Put your hands together for Honorable CM. It's an honor to have with us Dr. Vijay P. Bhatkar ji, President Vigyan Bharati. He's online with us. May I now request Dr. Vijay P. Bhatkar ji, President Vigyan Bharati, to say a few words about IISF 2021. तकनीक की टीम से आग्रह कि विजय भटकर जी को ऑनलाइन जोड़ लें. From the city of Pune, it's a We great welcome honor. you, sir. Over to you. This is the 7th IISF, which began in 2015, and I have been present for each of these great festivals, which has adorned India's march into
science and technology, and now innovation. Friends, while this is a great celebration, this celebration is occurring in the backdrop of great tragedy that has struck our entire nation. But as the nation stands, as we have seen yesterday, that we are facing this tragedy with great braveness, and our celebrations will go on. This is the spirit of our great nation. Friends, as you look back, the last 7 years, and as I was told to you, we began in IIT Delhi. First occasion, I remember the great enthusiasm at that time with the students, with the scientists, with the participants, and the people at large. Then we moved, as I was told to you, NPL Delhi, and then to Chennai, IIT Chennai, and then to very first time to Lucknow, and then Kolkata, and then we had a great, I think, challenge of organizing in the pandemic, then the whole online event, which were done extremely successful. So, and now we are in, I think, Panaji, Goa, and celebrating this event. This is a festival of festivals. If you if you see the next 4 days, there will be festivals and festivals celebrating different events, and that will showcase where we stand in terms of our education, in terms of our innovations, in terms of our technologies that the nation has put before us. Friends, I think I remember the enthusiasm of students and how our students have won so many awards, including the great distinguished awards in various festivals, and made the nation very proud. I would say that these festivals, in a way, are reaching to the people at large. I think you will see that one of the objectives right from the beginning and right from independence was really to create that I think, reaching out to science for the benefit, for the prosperity of India, and that's what has happened. I remember the people traveling across India from different villages, different colleges, different schools to celebrate this event. And this is in a way a unique event in the context of even the world in terms of its reach and in terms of its celebration. And I think I would like to congratulate everybody. Vigyan Bharati has been playing also a very stellar role in this whole process. It started with the initiation from Vigyan Bharati, and then several institutions. The first time, several institutes, scientific institutions, and we have built a spectrum of institutions since independence, and all these institutions converge together to celebrate. It's a great teamwork. I think we began this event, which we have been organizing from 2015. So, sirs, I greet all of you. I welcome all of you. And the nation is very proud for, as we'll see through this entire event, what progress the nation has accomplished on the front of science and technology, and the nation is marching towards great prosperity through the advances in science and technology. Once again, I welcome you, and I'm very happy, as I said, that even in the backdrop of the great tragedy that has struck to us, but we'll stand and celebrate this event. Thank you very much. माननीयों को अभी सुनना है, सभी का संक्षेप में ही उद्बोधन होगा, लेकिन अभी मैं बड़े ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, और आप सबसे तालियां प्रार्थित हैं। अंत में कुछ परिवर्तन की सूचना मुझे मिली थी, इसलिए मैंने आपको अनुरोध कर लिया पहले। सर, अभी आप सबसे तालियां प्रार्थित हैं आदरणीय श्रीपद नायक जी के लिए, उनसे संक्षेप में 2 शब्द। नमस्कार
dignitaries on dais for today's function, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Sri Sarvanand Sonowal ji, Honorable Union Minister for Ayush, Port and Shipping, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस, डॉक्टर विजय पी भाटकर जी, प्रेसिडेंट विज्ञान भारती, डॉक्टर एम रविचंद्र जी, सेक्रेटरी MOES, माननीय श्री सकलेजा जी, श्री शेखर मांडे जी, मिसेस इंदिरा मूर्ति जी, जॉइंट सेक्रेटरी MOES, all विज्ञान प्रेमी और साइंटिस्ट भाइयों बहनों, it gives me an immense pleasure to be a part of this year's Indian International Science Festival. This is the 7th edition of the festival, and it's very heartening to see the response is increasing year by year. Launched in 2015, IISF is an annual event considered to be the biggest platform in the country, which brings together the students, the public, researchers, innovators, and artists from around the globe to experience the joy of doing science for the well-being of the people and humanity. The theme for this year's festival is celebrating the creativity in science, technology, and innovation for prosperous India. It will also reflect the spirit and idea of Azadi Ka Amrit Mahotsav of India, which aims to mark 75 glorious years of Indian independence in 2022. Swadeshi Science Movement was started in Indian Institute of Science, Bengaluru, by a few eminent scientists under the guidance of Professor K.I. Vasu. This movement gradually gained the momentum and emerged as an organization with national presence. In 1991, it was decided to launch a Swadeshi Science Movement at all India level and name it Vigyan Bharati. One of the objectives is to motivate the young scientists towards the greater creativity and originality. Under the visionary leadership of Sri Narendra Bhai Modi ji, India has made the giant leap in science and technology in the past 7 years. Modi ji has given priority to the field of science and technology and accordingly enhanced the budgetary allocation also. NASA, which is a premier institute of space and American, has been obtaining the pictures taken by the Indian Space Research Organization, that is the ISRO, through its Chandrayaan and Mangalayaan mission. Countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh are using the India's technology for the weather forecast. Under the Narendra Bhai Modi ji's leadership, India's ranking in the Global Innovation Index has been improved by many fold. I would urge to young scientists, researchers, and innovators to put your whole heart in your effort and contribute to the prosperous India. Your dedication and commitment will decide yours, ours, and country's future. I wish to you all the best and hope the next 3 days will be fruitful. Thank you. Jai Hind. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words. May I now request
Honorable Union Minister Shri Sarbanand Sonowal ji to address us and encourage us. तालियों के साथ स्वागत करें. नमस्कार. India International Science Festival 2021, celebrating creativity in science. आज गोवा की पनाजी शहर में आयोजित इस सभा में हमारे बीच उपस्थित गोवा की लोकप्रिय कमर्ट चीफ मिनिस्टर परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और भारत सरकार की परम आदरणीय वरिष्ठ हमारे नेता मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग की दायित्व को माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से, निर्देश से, निष्ठा से निभाने में सफलता प्राप्त की है. ऐसे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग की केंद्रीय मंत्रिमंडल की हमारे साथी, भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग, वाटरवेज और टूरिज्म की राज्य मंत्री परम आदरणीय श्रीपद नायक जी, मध्य प्रदेश सरकार की परम आदरणीय मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी और डीजी CSIR और सेक्रेटरी DSIR डॉक्टर शेखर मंडे जी, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस की सेक्रेटरी डॉक्टर रविंद्रन जी, विज्ञान भारती की नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी माननीय जयंत सहस्रबुद्धे जी और आज इस सभा में उपस्थित हमारे परम आदरणीय व्यक्तिगण और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं गोवा की जनता को श्रद्धापूर्वक मैं नमस्कार देता हूं, क्योंकि गोवा की जनता ने आज हिंदुस्तान को दुनिया में एक शक्तिशाली पहचान बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दी है. आपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देकर दुनिया की सबसे आकर्षित एक प्रदेश के हिसाब से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश विदेश की आपने टूरिस्ट को यहां मर्यादा पूर्वक स्वागत करके उनको रहने का, उनको स्वागत करने का
जो व्यवस्था आपने खड़ा की है, इसकी वजह से आज देश का सभ्यता संस्कृति का जो मूल्य है, इनको विदेश में भी आपने बढ़ावा देने का काम किया है। इसलिए मैं गोवा की जनता को हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम देता हूं। आज 21वीं शताब्दी है। हम सबको मालूम है विज्ञान और प्रयुक्ति की द्वारा ही अपना शक्ति बढ़ाना होगा। देश में बसे हुए संपदा शक्ति और संभावना को उजागर करना होगा। और आज हम सब सौभाग्यशाली है कि देश में हमारे आदर्शवादी नेता, देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर देश में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में सफलता प्राप्त की है और देश को एक दुनिया के अंदर बड़े शक्तिशाली देश के हिसाब से खड़ा करने में जो सफलता प्राप्त की है, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है और देश का हर नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी की दिए हुए वाणी को, यानी कि उन्होंने जो नीति हमें हाथ में दी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको मिलकर हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने का जो लक्ष्य उन्होंने तय की है और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो उन्होंने महत्वपूर्ण लक्ष्य तय की है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, देश के अलग अलग प्रांतों में बसे हुए हर व्यक्तियों ने भी आज प्रतिबद्ध लिया है और सब लोगों ने मन बनाया है कि हम मेहनत करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करेंगे। तो आज इस सभा में मैं विशेष रूप से जितेंद्र सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को देश के अंदर बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने अलग अलग प्रांतों पर ऐसे ही फेस्टिवल आयोजन की है ताकि हमारे विद्यार्थी, नई पीढ़ी साइंस से जोड़े, टेक्नोलॉजी से जोड़े और उनका अनुभव जागे और उनके कैपेसिटी बढ़ाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यूथ लेड डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने आग्रह किया और उनके लिए नई रास्ता दिखाया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और आज हमारे युवा ने अलग अलग कर्म क्षेत्र में अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हमारे बीच में बसे हुए अलग अलग शक्ति को हमें बढ़ावा देना होगा। मैं आयुष मंत्री होने के नाते आयुष मंत्रालय में आज आपको सबको मालूम है भगवान ने हमें जो पृथ्वी हमें दी है, धरती माता को, हर बेटा बेटी को सेवा करना सबका जीवन का धर्म है, ये मानना होगा। सबका फर्ज है, ये मानना होगा। सदियों से हमें ये परंपरागत शिक्षाओं से हम अपने समाज को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम सब लोगों से आग्रह की है कि हमारे प्रकृतियों में, पहाड़ों में, नदियों में, सागर में, महासागर में, आकाश में, वायुमंडल में, जंगल में, पशु पक्षियों में, कीड़ा मकोड़ा में, यानी कि भगवान का सृष्टि प्राणियों का बीच में
और भूगोल का बीच में बसे हुए शक्ति को पहचानना होगा और उनमें बसे हुए शक्ति को आविष्कार करना होगा। इसलिए विज्ञान का सहारा लेना होगा। इसलिए हम आयुष मंत्रालय की तरफ से हमारे पेड़ में पत्ते हो, बार्ग हो, रूट हो, स्टेम हो, और आज इसी शक्ति को उजागर करने के लिए हम लोगों ने आयुष मंत्रालय के द्वारा हमारे परंपरागत जो पद्धति है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, हमारे प्रकृतियों में शक्ति बसा हुआ है, उनको हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च और स्टडी के द्वारा उनके बीच बसे हुए शक्ति को उन्होंने पहचाना और उनका फाइंडिंग्स निकाला और साइंटिफिक वैलिडेशन डेवलप किया। बाद में उनसे एविडेंस डेवलप हुआ और बाद में हम आयुष विभाग की तरफ से अलग अलग औषध बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में लोकप्रिय बनाया। योगा को विश्व मंच में किसने प्रतिष्ठा किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप यूएनओ का हर मेंबर नेशन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हिसाब से निष्ठा से वो मनाते हैं। सबको मालूम है युग का सहारा लेंगे तो सुशासन का मालिक बनेंगे, जीवन में शांति प्राप्त होगा, तन मन आत्माओं को जोड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। कितना बड़ा एक जीवन का रास्ता उन्होंने दिखाया। प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों ने 1000 साल तपस्या करके हमें ये पद्धति सिखाया, मार्गदर्शन दिया, लेकिन हम लोगों ने इसको स्वीकार करने में, मान्यता देने में बहुत पीछे रहे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तानी समाज जाग उठा है। आपको पसंद होंगे क्योंकि आज आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में $18.1 बिलियन का मार्केट बनाने में सफलता प्राप्त किया है। और आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया, ओशन के अंदर बसे हुए शक्ति को आविष्कार करने में विज्ञान और प्रयुक्तों को प्रयोग किया गया है। और हमारे शिपिंग, पोर्ट, वाटरवेज मंत्री होने के नाते हमारा भी फर्ज है ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में, ग्रीन शिपिंग के सिलसिले में। आप लोगों को मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक उन्होंने जो लक्ष्य हमें दिया है उसी के हिसाब से हमें अपने आप को प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं और इससे कई कदम उठा चुके हैं। और आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि सी बेड में बसे हुए जो भी मिनरल्स है, अलग अलग शक्ति है, उसको आविष्कार करने में जितेंद्र सिंह लगे हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। प्रदूषण मुक्त भारत, प्रदूषण मुक्त विश्व, कितना बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। इंसानियत का धर्म अगर निष्ठा से निभाना है तो मुझे लगता है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने जीवन में वो करके दिखाया है। 7 साल के अंदर आप देखिए, उन्होंने पहले कांग्रेस के शासन काल में आपने देखा है सरकार भी थे, व्यवस्था भी थे, लेकिन नियत नहीं थे। और उनका नियत ना होने के वजह से वो पीछे रह गए। लेकिन मोदी जी का कहना है, नीति हो या रणनीति, कितना ठीक क्यों ना हो, अगर नियत खराब है सब बिगड़ जाता है। इसलिए सुशासन व्यवस्था लागू करने में, उसको मजबूत बनाने में
मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर जो मेहनत की है, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से, ईमानदारी से देश सेवा करने में जो उन्होंने उदाहरण खड़ा किया है, इसलिए हम सबको उसी दिशा पर जाना चाहिए और उसी हिसाब से अपने भारत माता को विश्व के अंदर शक्तिशाली बनाने में सबका योगदान होना चाहिए। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोवा सरकार की डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी अपने वरिष्ठ नेता श्रीपद नायक जी का साथ मिलकर गोवा सरकार को, गोवा का जनता को साथ लेकर पिछले दिनों में जो मेहनत किया है, इसके काफी मोदी जी के आशीर्वाद से, सहयोग से प्रगति हासिल की है। और गोवा अब देश की अन्यतम प्रदेश है जो विकास के रास्ते पर जोर से चलने लगा है। और मेरा मानना है एक दिन गोवा देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया और हमारा आयुष मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ हम लोगों ने स्टॉल खड़ा किया है, अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। प्लीज आप लोग भी विजिट कीजिएगा। आपको मेरा यही विनती है कि आप भी अलग अलग स्टॉल देखिए। विज्ञान मोदी जी के नेतृत्व में कैसे प्रगति कर रहा है और अपने वैज्ञानिकों ने कितना बड़ा उपलब्धि जगाया है कि उन्होंने खुद वैक्सीन बनाकर दुनिया में इतिहास रचना किया है। उन वैज्ञानिकों के लिए एक बार प्लीज क्लैप योर हैंड, जिन्होंने देश में कोरोना काल में मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन खुद उत्पादन करके 130 करोड़ लोगों को राहत दिया और ये पेंडेमिक से बचाया। तो इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देते हुए, उन वैज्ञानिकों को प्रणाम देते हुए और यहाँ सभा गृह में उपस्थित सबको प्रणाम देते हुए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। नमस्कार। भारत माता की जय हिंद। Thank you, sir. Thank you for your encouraging words. Up next, we have release of IISF 2020.